Hello students. So you all know now admission to Delhi University and other central and state universities will be based on CUET exam. Now in CUET you have a language, then the domain subjects and a general test. So here we'll be discussing something on mathematics today. अगर आपने E को ऑनर्स देना है तो मैथमेटिक्स एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है and likewise many other papers, many other streams you can choose mathematics as a domain and you'll have to appear. So what type of questions can come? So we are starting today our first lecture based on this. We will be giving you more series of lecture based on this. So just an introduction where we give a small insight as to how questions may appear in the objective form. And we'll be elaborating more in our subsequent lectures on those questions. So today we have taken the first chapter matrices. On the basics of that, how the questions can appear in CUET. And you have to remember it is +5 and -1. So if you get a wrong answer, you lose out not 1. In fact, you have sacrificed 6 marks. So it's a +5 and a -1, right? So here we get going, guys. So this is the first question. Total number of possible matrices of order 3 cross 3. So one thing is, what is the order? 3 cross 3. So it's going to be 9 elements, which each entry is 0 or 1. So you have here the possible elements as this, right? A22, A23, you have A31, A32 and A33. So now the question says each entry is 2 or 0, right? So nothing is written, so that means the elements can be repeated, right? So it's a case of a permutation, right? So in case the entries are not repeated, with this two will not be able to do, क्योंकि यहाँ तो 9 elements है. So इस question का answer क्या होगा? Now A11 can be 0 or 2. So A11 को put करने का, there are 2 possibilities. Likewise, 2 possibilities. Likewise, 2. So each element has 2 possibilities. So up to 9 terms. So the answer should be 2 to the power 9, and that is 512. इस question का answer ये है. Now इसी question में say they would have given 0 to 9. I'm just extending a question. वो ये कहते थे 0 to 9 each entry, right? And repetition allowed and not allowed, that they can use. So in case each element can be repeated, so we have 10 possibilities. Sorry, because 0 included, we have 10 possibilities. So 10 into 10 into 10 up to 9 terms. If it is 3 by 3, so 10 by 9. So if not repeated, अगर वो ये कहते हैं कि एक बार कोई एलिमेंट आ गया वो रिपीट नहीं हो सकता, तो यहाँ 10 आ सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे या कहीं पे भी 9 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं. So it is basically 10p9. So that can be there. और अगर 2 by 2 मैट्रिक्स है तो 4 होंगे. So various possibilities, right? So for this particular question we have 512 as the answer. Moving on to next question. Now this is the question you can see. A is this, B is this, and A minus B निकालना है. So it's based on properties of inverse matrix. Now suppose I am finding A minus B. 1 by pi is going to be common. आप देख लो दोनों में 1 by pi है, वो तो बाहर हो गया. Now this minus this, you will get sin inverse pi x plus cos inverse pi x. And here you are going to get 0. यहाँ पे आपको फिर 0 आ जाता है और वहां पे आएगा cot inverse pi x plus tan inverse pi x. So what are you going to get? 1 by pi, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? pi by 2. So you get pi by 2, 0, 0 and pi by 2. So what is common? You can see pi can come common, right? Pi सबसे हम common ले सकते हैं. Or you multiply this pi. So you multiply होगा, you will get half, 0, 0, half. Right? So half can be taken out. You will get 1, 0, 0, 1. So that is half pi. So the answer is
half times I. Got it? So that is how the question can be done. So it has use of matrices as well as inverse triple. Right? So moving on to next question. If A and B are two matrices of order this and this, then the order of the matrix 5A minus 2B. अब आपको ये पता है कि जब हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो ये दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तभी हम कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन है लिटिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट, राइट? तो अगर हम इसको A का ऑर्डर 3 क्रॉस n है और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस n है, तो इसका ऑर्डर क्या है? अब भाई इसके ऑर्डर के लिए इसको और इसको रोल प्ले करना है. m n के बराबर है तो m n के बराबर है, तो एक पॉसिबल ऑर्डर है 3 क्रॉस n 3 क्रॉस n. और अगर दूसरा n ही रखना है, मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी कह रहा हूं, तो या तो a माइनस बी इसका ऑर्डर जो है ये हो सकता है या ये. हमारे को चॉइस में क्या दिया है? ये तो दिया नहीं है, ये दिया हुआ है. सो डी इज द राइट चॉइस, राइट? तो इसका आंसर डी आ जाएगा. सो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. If A, B are matrices of same order, then what will happen to this, right? So A and B are matrices of the same order. So you have to find whether it is symmetric, skew symmetric, or what. Right? So you have to find whether it is symmetric, skew symmetric, or what. Right? So AB. Now we know A minus B का transpose is A dash minus B dash हो जाएगा. तो अब ऑब्वियसली हमारे को भी सॉल्व कर रहे हैं, फिर ये सब क्वेश्चन आप मेंटली भी कर सकते हो. तो दिस इज ए बी डैश का होल डैश माइनस बी ए डैश का होल डैश, ए माइनस बी का होल डैश. नाउ यू नो ए बी डैश क्या होता है? ए बी का डैश बी डैश ए डैश. सो इट विल कम बी डैश, पहले ये उसका डैश ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश एंड बी डैश. So what are you going to get? Transpose का transpose is this. So you can take minus common. So you get AB dash minus BA dash, जो कि इसके बराबर है. So कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आए तो आंसर will be skew symmetric. Answer will be skew symmetric. Next question. If A is a square matrix such that A square is equal to I, A square I के बराबर भी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? A square is equal to I, so what is going to be? हम किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं और उसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? I के बराबर. तो पहले हम प्रोसेस देखते हैं. So what is this you are going to expand? अब देखो A cube प्लस बी क्यूब अगर मैं लगाता हूं तो a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab होता है. ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, और देयर इज अ फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस a. सो a क्यूब प्लस बी क्यूब उसको तो हम एज इट इज रखना है. तो a क्यूब प्लस बी क्यूब यू कैन अप्लाई a प्लस बी इंटू a स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, और यू कैन स्ट्रेट अवे एक्सपैंड ऑल्सो. इसको आप एक्सपैंड करेंगे तो a क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3ai इंटू a माइनस आई प्लस a क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3ai इंटू a प्लस आई minus 7a as it is. A cube. Now a square I के बराबर है, so a cube will be equal to a square into a, that is I into a, that is same as a. I into a will be a. तो a cube की वैल्यू a है, I cube I होता है, ai a ही हो जाएगा into a minus I. A cube is again a माइनस ये 3a हो जाएगा, राइट? ai is a. So what are you going to get? A minus a minus 3a square plus 3ai plus a plus I plus 3a square plus 3ai minus 7.
right? So a minus I, what is a square? I के बराबर plus 3a plus a plus I, what is a square again? I. So now everything has come down to a and I. तो आंसर देखते हैं माइनस आई और प्लस आई उड़ गया, माइनस 3i एंड प्लस 3i गया, so 3a 4a 6a 7a 8a minus this, so a 4a 5a 8a 8a minus 7a, so the answer is a. So if the given condition is this, हमारा आंसर a आ रहा है. Got it? So our answer is finally coming out to be a square is equal to this. Clear हो गया? I hope you are all clear with this. So that is how we solve this question and we get the answer, right? Right. So let us move on to the next question. If A is a skew symmetric matrix, तो A square को क्या होगा? This is an important question. A अगर skew symmetric है तो A square क्या होगा? अब A square का ट्रांसपोज देखना है क्या होगा, है ना? अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक करूंगा उसका ट्रांसपोज A is a skew symmetric, तो A is equal to minus A का ट्रांसपोज, इसका स्क्वायर will be equal to this, दोनों को स्क्वायर कर दें तो A square is equal to A square is equal to this, तो माइनस का स्क्वायर यही हो जाएगा, तो a रेज टू t का स्क्वायर, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है. नाउ a स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी है, अगर आपको ट्रांसपोज का स्क्वायर करना है तो दैट इज सेम एज पहले आप उसका स्क्वायर कर लो ट्रांसपोज, तो a स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? a स्क्वायर टू द पावर t. तो मतलब अगर a स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि a स्क्वायर इज दिस. क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो इसके बराबर है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके बराबर आएगा तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा. ठीक है? So this is the question. So what we'll be doing, we'll be getting more questions based on this. We'll be running a series where we'll be doing more questions and we'll cover each topic, the possible questions which can come there, and also we'll get you more pattern, right? So keep watching, sharing your suggestions, and it's all over. That's all for today, and we'll get back with the next lecture. Thank you.